Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Fitra Fast Bracket Secondary Schools, our project of Fitra Education System. Dear students, in the last video lectures, we have been going through pronouns and types of pronoun. Just to remind you, we have 5 different types of pronouns: personal pronouns, possessive pronouns, self pronouns, demonstrative pronouns and interrogative pronouns. I have explained you all these 5 different types of pronouns in detail in 4 or 5 different videos. Today we are going to solve the exercises of pronouns in our grammar book. Let's open page number 29 in your grammar books. On page number 29, exercise A is given, which says underline self pronouns and write whether it is reflexive or emphatic. If you remember, we discussed about self pronouns when they are called or they are used as reflexive or when they are used as emphatic. To remind you, any self pronoun that comes at the position of object in the sentence is called reflexive pronoun, and any self pronoun that comes in the sentence additionally besides the object position, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो जुमले में ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आता है, ऐसा सेल्फ प्रोनाउन उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, और ऐसा सेल्फ प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट पोजीशन के अलावा हो, यानी कि जुमले में मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद हो या ना भी हो, लेकिन सेल्फ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पोजीशन पर ना हो या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल ना हो रहा हो. Now look at the board. I have written 2 sentences from this exercise. There are more or less 10 sentences given in this exercise. We will solve these 2 sentences and the rest of the sentences you will solve on your own in the book. Whenever you are going to do work in your book, you have to mention Christian dates and Islamic dates. Okay, sentence number 1. The injured soldier dragged himself to a safe place. In this sentence, let's identify subject, verb and object and see if the self pronoun himself is being used at object position or additionally. Accordingly, we will call it reflexive or emphatic. Here you are. You can look at the board. The injured soldier is the subject of the sentence. Dragged is the verb and himself is the object, which means that this self pronoun is used at the object position in the sentence. So we will call it a reflexive pronoun and we will denote it with capital R. Here you are. Himself, capital R, which means this is a reflexive pronoun. Let's go through sentence number 2. The president himself awarded the intellectuals of the country. Let's identify subject, verb and object and see if the word himself, self pronoun, is being used at the object position or additionally. You can see here the president is the subject of the sentence, awarded is the verb, while the intellectuals is the object in the sentence. Where is self pronoun? Here it is. So this self pronoun is neither object of the sentence, but it is being used additionally here. So this is not a reflexive pronoun but an emphatic pronoun. So we will denote it with capital E. Here you are. Himself as capital E, which means this is emphatic self pronoun here, while himself in the first sentence is the reflexive self pronoun. You people have to do the rest of the sentences on your own, the same way as I have told you or explained you here, that you have to parse, you have to identify subject, verb and object in the sentence, and then you have to see whether the self pronoun is being used as objects
or additionally. If as object, then this is reflexive pronoun. If additionally, then there is emphatic pronoun. Let's go through exercise B in your book. But before you go through exercise B, you need to pause the video here, solve this exercise in your book, and then move on to exercise B. Here you are with exercise B on page number 29. Fill in the blanks with correspondent reflexive pronoun. You know, either reflexive pronoun or emphatic pronoun, or we may call it self pronoun. Self pronoun always reflects back to the subject in the sentence. So the correspondent reflexive pronoun is always in connection with the subject. जब भी आप किसी सेल्फ प्रोनाउन को जुमले में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या एम्फेटिक प्रोनाउन हो, तो हम उसको सब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट लेते हैं. जो जुमले में सब्जेक्ट होगा उसी का रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन होगा. I have exemplified you 2 sentences here from your exercise. There are 10 sentences in your exercise B on page number 29. Sentence number 1 I have taken and sentence number 7. 1 is very simple, 7 is little complicated or technical. I'll tell you what technique is there in sentence number 7. But before that, let's go through sentence number 1. She fell off the chair and heard dash. What do we use here in this blank as a reflexive pronoun? The correspondent reflexive pronoun to the subject. Yes, very right. Herself. Correspondent to the subject. She, herself. She fell off the chair and hurt herself. You can go through sentences number 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10. I'm exemplifying you here. Sentence number 7. As I told you, this is little technical. How it is technical? Let's go through this. Wow, there is a great high tea. And then the sentence continues, Ali, comma, help dash. What do you think the reflexive pronoun should come in this blank? I heard many of the students are saying corresponding to Ali, so we will use himself here, but we will not use himself here, not because of Ali. Ali is not the subject here. Ali is a calling word. When you are addressing to somebody, you call him or you address to him. Like for example, if I am talking to Ahmad, I will say, Ahmad, come here. So what do you think Ahmad is here? Ahmad is an additional word. So same as Ahmad, Ali is an additional word. The actual sentence is help dash. The actual sentence. So the sentence is starting with the verb. जो भी जुमला डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होता है, देखिए कॉमा है यहाँ पर, इससे पहले अली लिखा हुआ है. इसका मतलब कि अली इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस. अली जो है वो हेल्प डैश का पार्ट नहीं है. अली तो सिर्फ एड्रेस यानी कि मुखातिब करने के लिए, सामने वाले को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किया, उसका नाम लिया, वरना असल सेंटेंस है हेल्प डैश. और ये हेल्प डैश जो जुमला है ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और जो जुमला वर्ब से स्टार्ट होता है उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस देते हैं. और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, यू होता है, क्योंकि हम जब भी किसी को ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन या रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बंदा हमारे सामने मौजूद होता है. फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है. फर्स्ट पर्सन का मतलब स्पीकर, सेकंड पर्सन का मतलब लिसनर, एंड थर्ड पर्सन का मतलब द वन और द वंस बीइंग टॉक्ड अबाउट. थर्ड पर्सन कहते हैं जिनके बारे में बात हो रही हो. फर्स्ट पर्सन मैं या हम, सेकंड पर्सन तुम या आप, थर्ड पर्सन वो. तो जब भी हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, सजेशन देते हैं या एडवाइस करते हैं, तो वो बंदा हमारे सामने होता है, हमें सुन रहा होता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है. याद रखिएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम जुमला तो डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट करते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेकर आओ. सिट डाउन, बैठ जाओ. स्टैंड अप, खड़े हो जाओ. स्लीप, सो जाओ.
पिक अप योर बैग, अपना बैग उठाओ, ये सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं और हम ये किससे कहते हैं? अपने सामने वाले से। जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर होते हैं, सब्जेक्ट का हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट ऑलरेडी पता होता है इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। और वो सब्जेक्ट क्या होता है, किसको कह रहे हैं काम करने को? डूअर ऑफ एक्शन कौन होगा? अगर मैं कहूँ, आपको कहूँ मैं स्टैंड अप, खड़े हो जाएं, तो काम करने वाला कौन है? आप लोग हैं। आप लोग मेरे लिए क्या हैं? सेकंड पर्सन है। तो स्पीकर के लिए इम्पेरेटिव के जुमले में सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन होता है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, यू है, यहाँ यू हैव। अब जब हम सेल्फ प्रोनाउन लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वो यू के मुताबिक लगाएंगे जो सब्जेक्ट इस्तेमाल तो नहीं कर रहे लेकिन अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर आएगा हेल्प योर सेल्फ, हियर यू आर। अगर हम ज़्यादा लोगों से मुखातिब हो रहे होते, अली एंड आसिफ, अगर सब्जेक्ट दो होते, अली एंड आसिफ, हम दो लोगों को मुखातिब करके बोलते तुम दोनों ये ले लो ग्रेट हाई टी सर्व हुई हुई है। हाई टी किसे कहते हैं? चाय के साथ जब दूसरी रिफ्रेशमेंट होती है, लवाजमात होती हैं, तो उन्हें हम हाई टी कहते हैं। तो बिस्किट्स भी रखे हुए, पेटीज भी रखे हुए, समोसे भी रखे हुए और बिस्किट भी मिक्स्ड रखे हुए, उसके साथ एक दो चीज़ें और भी हैं मज़े मज़े की। तो बड़े मज़े की चीज़ें हैं। अब मैं मुखातिब कर रहा हूँ अली को कि अली ये ले लो, हेल्प योर सेल्फ, ले लो, जो लेना है तुम्हें ले लो। तो मैं किसको कह रहा हूँ कि काम कौन करेगा? डूअर ऑफ एक्शन कौन होगा? अली। और अली मेरे लिए क्या है? यू। इसी तरह अगर अली और अहमद होते, दो लोग होते मेरे लिए, तो डूअर ऑफ एक्शन डबल होते, सेकंड पर्सन प्लूरल होता, तो यहाँ पर योर सेल्व्स आता। लेकिन चूंकि मैं सिर्फ एक ही बंदे से मुखातिब हूँ तो योर सेल्फ आएगा। यू विल डू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन योर ओन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। You may pause the video here and do exercise B. Then we will move on to exercise C. Okay, here you are with exercise C on page number 30 in your books. Exercise C says, write whether the underlined words are pronoun or adjective. Before we go on to solving this exercise, इससे पहले कि हम ये exercise solve करें, let me remind you, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि प्रोनाउन कब प्रोनाउन के तौर पे काम करता है और कब प्रोनाउन एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन करता है। वैसे तो आपको प्रोनाउन का इस्तेमाल पता है कि कोई भी वर्ड जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं और उसकी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन जब ये प्रोनाउन किसी भी नाउन से पहले आ जाता है और नाउन को आइडेंटिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, उसके बारे में मज़ीद बताता है, तो यही प्रोनाउन एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन करता है। होता ये प्रोनाउन है लेकिन इसका फंक्शन, इसका काम एडजेक्टिव के तौर पे होता है। अब हमें अंडरलाइंड वर्ड्स को बताना है कि ये प्रोनाउन है प्योरली या एडजेक्टिव प्रोनाउंस हैं। आई हैव टेकन 2 sentences as example from your exercise. There are 5 sentences in exercise C. I have taken sentence number 1 and sentence number 5. Let's go through sentence number 1 first. Could you move your card please? अब आप यहाँ देख सकते हैं you और your को अंडरलाइन किया गया है। you के बाद वर्ब आ रहा है, तो इसका मतलब कि you एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन नहीं कर रहा बल्कि प्रोनाउन के तौर पे कर रहा है। लेकिन यहाँ योर के बाद कार, कार चूंकि नाउन है, योर कार तुम्हारी कार, ये वर्ड योर कार को मॉडिफाई कर रहा है, कार की पोजेशन बता रहा है। ये है तो डिटर्मिनर लेकिन काम इसका एडजेक्टिव के तौर पे हो रहा है। तो हम जो प्रोनाउन होगा उसके ऊपर कैपिटल P और जो एडजेक्टिव होगा उसके ऊपर कैपिटल A लिख देंगे। You can look at the board here. You is being used as pronoun and your is being used as adjective because you के बाद कोई मज़ीद नाउन नहीं है। you खुद एक प्रोनाउन है, नाउन की जगह पर आ रहा है, तो इसीलिए इसको हमने प्रोनाउन कहा। जबकि your है तो ये पॉजेसिव डिटर्मिनर है, तो ये प्रोनाउन, लेकिन इसका काम इस सेंटेंस में
एडजेक्टिव का है, जो काम एडजेक्टिव करता है यानी कि नाउन को मॉडिफाई करना। यहाँ पर योर जो है वो कार को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए हमने इसको एडजेक्टिव के तौर पे लिखा। लेट्स गो थ्रू सेंटेंस नंबर 5। चेक इट्स व्हील, इट लुक्स फॉल्टी। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन, ये दो जो इट्स और इट लिखे हुए दो प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है? आप देखिए, चेक इट्स व्हील, इसका पहिया, इट्स व्हील, तो ये लफ्ज इट्स व्हील को मॉडिफाई कर रहा है, तो जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जबकि ये जो इट है, इट लुक्स फॉल्टी, ये लग रहा है कि इसमें कोई फॉल्ट है, इसमें कोई नुक्स है, तो यहाँ पर इट जो है वो किसी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, जबकि इट्स नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर भी आपने देखा कि इट्स जो है वो इट का पॉसेसिव डिटर्मिनर है, यानी कि हमें यहाँ से एक बात और भी समझ में आई कि जितने भी पॉसेसिव डिटर्मिनर प्रोनाउंस हैं वो हैं तो प्रोनाउंस, लेकिन उनका फंक्शन, उनका काम होता है एडजेक्टिव का। तो हम क्या करेंगे कि जो वर्ड हमें प्रोनाउन लग रहा है उसमें कैपिटल पी और जो हमें एडजेक्टिव लग रहा है उसमें कैपिटल ए लिखेंगे। Here you are, you can look at the board here. I have written A for adjective. It's pronoun है, possessive determiner, लेकिन काम adjective का कर रहा है। इसी तरह it pronoun है और काम pronoun का कर रहा है, adjective का नहीं कर रहा, तो P लिख दिया। You will do the rest of the sentences number 2, 3 and 4 on your own, and they are not difficult at all. You may pause the video here, solve this exercise and then come back to the video. We will solve exercise D. Here you are with exercise D on page number 30 in your grammar books. Exercise D says, fill in the blanks with suitable pronouns and also write down its kind in the parentheses. You have parentheses given in the book. While I have drawn the blanks here, it's okay, no problem. You may write down in the parentheses, I will write down in the blanks. What we need to do in this exercise is that we have to add up, fill up the pronoun first, pronoun according to the sentence from any of these 5 types, or you may call them kinds, and then we have to write down here in the blanks or under the parenthesis what kind of pronoun we have used here in the blank here. आपको करना क्या है कि इन blanks में sentence के मुताबिक pronoun लगाना है इन 5 kinds में से किसी एक kind में, और फिर उसको लिखना है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर जो ब्लैंक में जो प्रोनाउंस लगाए हैं वो किस काइंड या टाइप के प्रोनाउंस हैं। I have taken 3 sentences from 10 sentences given in this exercise on page number 30. Sentences number 1, 4 and 5. Let's go through sentence number 1 first. I dash saw him to do it. I'll tell you here, this to in the sentence is by mistake in your book, but anyhow I have written here on the board to, so that you should not be confused, but I'm telling you that this to is not used here. I saw him do it should be the sentence. Anyways, I dash saw him to do it or do it. Which pronoun do you think you can use here? Personal pronoun में subject pronoun होता है और object pronoun होता है, जबकि जुमले में subject pronoun और object pronoun already लगे हुए हैं, इस्तेमाल हुए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन की तरफ। पॉसेसिव में डिटर्मिनर और पॉसेसिव्स होते हैं, और आपको पता है कि पॉसेसिव प्रोनाउन या पॉसेसिव डिटर्मिनर दोनों ही मिल्कियत शो करने के लिए, पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर किसी भी चीज़ की इस जुमले में मिल्कियत नहीं बताई जा रही। वेरी गुड। अब आते हैं सेल्फ प्रोनाउन की तरफ, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आता है, जबकि सॉ के बाद हिम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं आएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल करके देखते हैं। आई माई सेल्फ सॉ हिम टू डू इट, मैंने खुद उसे ये करते हुए देखा। डू यू थिंक इट सूट्स हियर? यस इट डज। वेरी गुड। सो वी विल यूज एम्फेटिक प्रोनाउन इन दिस ब्लैंक हियर। आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन द ब्लैंक. So you see here on the board, I myself saw him to do it. Why I am using myself? Because the emphatic pronoun is always correspondent to the subject. जितने भी self pronoun जुमले में इस्तेमाल होता है वो subject के मुताबिक इस्तेमाल होता है। तो myself according to I myself saw him to do it. और चूंकि ये self pronoun object position पर नहीं है,
तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, एडिशनल है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। जो भी सेल्फ प्रोनाउन जुमले में ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। जो भी सेल्फ प्रोनाउन जुमले में एडिशनली आता है, इजाफी तौर पे, यानी कि बिसाइड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अलावा आता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन के अलावा हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एक्सक्यूज मी। So this self pronoun myself is emphatic pronoun. Sentence number 4. Dash is this book. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब ला महला हम ना पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पॉजिटिव, ना सेल्फ, ना डेमोन्स्ट्रेटिव, बल्कि हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, व्हाट, व्हिच, हुज, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो हमने प्रोबेबली 2 वीडियोस पहले गो थ्रू किए थे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में से कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर सुटेबल है? डैश इज दिस बुक, ये किसकी बुक है, ये किसकी किताब है? डोंट यू थिंक द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट आस्किंग पोजेशन ऑफ दिस बुक, कि ये बुक किसकी मिल्कियत है? जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पोजेशंस की बात करते हैं तो कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाते हैं? जी बताइए। एक्सेलेंट। एक बच्चे ने तो गलत जवाब दिया, वो बच्चा अपना जवाब सही कर ले, लेकिन 2-3 बच्चों ने सही जवाब दिया। बिल्कुल सही, यहाँ पर हुज आएगा पोजेशन के लिए एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 4, हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है? और मैंने यहाँ पर काइंड या टाइप ऑफ प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव लिखा है। सेंटेंस नंबर 5, डैश आर हैंगिंग गिफ्ट्स, यहाँ पर आपके मुताबिक क्या, कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए? पर्सनल प्रोनाउन आई एम, यू आर हैंगिंग गिफ्ट्स, वी आर हैंगिंग गिफ्ट्स? नहीं, बड़ा अजीब सा लग रहा है ये। पॉजिटिव, योर आर हैंगिंग गिफ्ट्स, माई आर, नो, ये भी नहीं आ सकता। सेल्फ प्रोनाउन, नहीं, सेल्फ प्रोनाउन भी नहीं लग रहा। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नहीं है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। अच्छा जी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बचे। ओहो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं जी? ये 4 होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस सिंगुलर ऑब्जेक्ट जो कि नियर हो, दीज प्लूरल ऑब्जेक्ट जो कि नियर हो, दैट सिंगुलर ऑब्जेक्ट जो कि डिस्टेंट हो, दूर हो, और दोज प्लूरल ऑब्जेक्ट्स जो कि दूर हों। एक्सक्यूज मी। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर चूंकि गिफ्ट्स, हैंगिंग गिफ्ट्स प्लूरल है, तो ला महला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या तो दीज लगेगा या दोज लगेगा। अब आप बताइए दीज लगना चाहिए या दोज लगना चाहिए? गिफ्ट्स हैंग हुए हुए हैं, इसका मतलब आपके एक्सेस में नहीं है, आपकी पहुंच में नहीं है। जो चीज़ आपके एक्सेस में ना हो, आपकी पहुंच में ना हो, आपसे डिस्टेंट हो, उसके लिए हम कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाते हैं प्लूरल? दीज या दोज? एक्सेलेंट, दोज लगाते हैं। सो यू कैन सी हियर दोज आर हैंगिंग गिफ्ट्स, और ये दोज कौन सा काइंड या टाइप ऑफ प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव। So my dear students, I have solved sentences number 1, 4 and 5 out of 10 sentences. The remaining sentences you will do on your own. You may excuse me, you may pause the video here and solve this exercise. Then we will move on to the last exercise of this chapter, exercise E. Okay, here you are with exercise F. Fill in the blanks with emphatic pronouns. I think the easiest exercise in the whole lesson. You already know emphatic pronoun is being used here, और इसको हमें ये ऑलरेडी पता है कि हमें यहाँ पर ब्लैंक्स में emphatic pronoun इस्तेमाल करना है। और emphatic pronoun हो या reflexive हो, whatever, self pronoun हमेशा correspondent होता है सब्जेक्ट के, तो जो सब्जेक्ट है उसी का emphatic या reflexive pronoun होता है। यहाँ पे emphatic pronoun लगाना है। emphatic क्यों लगाना है? क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस जो मैंने एग्जाम्प्लीफाई किए बोर्ड पर, she decorated her house, she subject, decorated verb, her house object. I heard the remarks, I subject, heard verb, the remarks object. ऑब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है। अब जो सेल्फ प्रोनाउन इस जुमले में लगेगा वो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। वो क्या होगा? वो एम्फेटिक होगा, क्योंकि एडिशनल लग रहा है। तो शी का एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है भाइयों? एक्सेलेंट, हरसेल्फ। और आई का क्या है? वेरी राइट, माई सेल्फ। अच्छा जी, ये आप बोर्ड पर देख सकते हैं। शी हरसेल्फ डेकोरेटेड हर हाउस एंड आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क्स अबाउट मी।
You people have to do the remaining exercise on your own. It's very easy, it's very simple. You only have to see what is the subject, and according to the subject you have to use correspondent reflexive या emphatic pronoun, emphatic here. तो आपके पास ये तीनों पर्सनल, पॉजिटिव और सेल्फ प्रोनाउन का मैंने चार्ट बनवाया था, वो आपके रजिस्टर में या कॉपी में बना हुआ होगा. आप उसके थ्रू भी इसको देखकर कर सकते हैं कि भाई आई का सेल्फ प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, शी का क्या है, वी का क्या है, यू का क्या है, दे का क्या है, व्हाटएवर. ठीक है. इंशाल्लाह ताला वी विल मीट अगेन in the next video lecture, but before that you must complete these exercises from A to F in your grammar book on pages number 29 and 30. Before the next video lecture you should have completed this, so that you people will be able to enjoy the next video lecture and do the assignment I'll give you in that particular video lecture. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.